Hello students, now in this video we will start with our chapter 5 of subject Secretarial Practice of class 12, chapter 5 Deposits. Now in this video we will see just introductory part, and then in the next video we will see terms and conditions for acceptance of deposits. Now already this deposits, public deposit was discussed in chapter 5. Okay. In chapter 5, we saw its meaning, definition. Now in this chapter, we will learn which companies can collect deposits, terms and conditions to be fulfilled, and the procedure to collect deposits from members and public. So, accepting deposits from the public or from its own member is also one of the sources of raising funds for a company. See, you all know that company need fund. Now, there are many sources for raising finance. Now, this is also a kind of a source to raise finance. Company can take deposits, company can accept deposits from public also, as well as its own members also. And it is cheaper to raise funds through deposits. It is a kind of short-term loan. We can say it is a kind of short-term loan taken by company. However, remember students, accepting deposits can be a risky option for a company in case it defaults in repaying the deposit. Now we will see next part. See, acceptance of deposits. In this chart, you can see which companies can collect deposits from members and from public. See, acceptance of deposits from members. From members, which companies can collect deposit? Private company, public company other than eligible company, and eligible public company. And from public, who can collect deposit from public? Eligible public company and government company. So you must have observed that private company can't collect deposit from public. Remember, private company can't collect deposit from public. They can collect deposit only from their members. Now see, all companies can accept deposits except which companies? यानी कौन सी कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती है? बैंकिंग कंपनी, देन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, एंड such other company as the central government will specify have to comply with the provision of section 73-76 of Companies Act 2013, and companies according to Companies Acceptance of Deposits Rule 2014, and or any other directives issued by RBI regarding acceptance of deposit. So these companies can't accept deposit. Now as we seen in the chart, हमने चार्ट में देखा था कि कौन कौन से कंपनीज कलेक्ट कर सकते हैं डिपॉजिट. तो हमने देखा था मेंबर्स से कौन कलेक्ट कर सकता है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड एलिजिबल पब्लिक कंपनी. तो प्राइवेट कंपनी यानी किससे कर सकती है? प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स और डायरेक्टर्स और रिलेटिव्स ऑफ डायरेक्टर्स, बट नॉट फ्रॉम पब्लिक. याद रखो, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर सकती है. बाद में पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनीज, these companies can accept deposit from its members or directors. An eligible public company, these companies can accept deposits from their members and also from the public. Remember, eligible public company ये member से भी collect कर सकती है deposit और public से भी. Eligible public company means कौन सी company? A company having a net worth of not less than 100 करोड़. 100 करोड़ से कम उनका नेटवर्थ नहीं होना चाहिए. नेटवर्थ यानी क्या? टोटल ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट,
आफ्टर डिडक्टिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेज, डिफर्ड एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। और भी एलिजिबल पब्लिक कंपनी है जो जैसे टर्नओवर, जिसका टर्नओवर of not less than rupees 500 crore and which has obtained prior approval of its shareholders through special resolution for accepting public deposit। ओके, वो भी कर सकती है। तो हमने चार्ट में जैसे देखा था, सी अगेन हियर, फ्रॉम मेंबर्स हु कैन कलेक्ट, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल कंपनी यानी जिसका 100 करोड़ से कम है नेटवर्थ, और एलिजिबल पब्लिक कंपनी, ये तीनों मेंबर से डिपॉजिट कलेक्ट कर सकते हैं। और पब्लिक से कौन कर सकते हैं? एलिजिबल पब्लिक कंपनी यानी जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ से कम नहीं है, और गवर्नमेंट कंपनी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये यहाँ पे देख लिया है।